that stoked up a big political row, and that is the G Ram G issue. That's right. That's the issue which has stirred up a real political ruckus. The latest legislation brought in by the Narendra Modi government, this time for rural employment, to replace the UPA's flagship Manrega scheme. Today in Parliament, we saw unruly scenes when the opposition tore the bill, even as the Agriculture Minister was making his stand clear. The fact is, should such bills have gone through legislative scrutiny, or are they being bulldozed? The politics of the G Ram G bill is our other story. Pandemonium in the Lok Sabha. The House descended into chaos as the Viksit Bharat G Ram G bill was passed amid uproar, with opposition MPs tearing copies of the legislation and raising slogans against the Narendra Modi government. As tempers flared, the Speaker warned the opposition, calling the disruption a violation of parliamentary decorum before putting the contentious bill to vote. सदस्य आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है, आपको चर्चा करने के लिए भेजा है. The government defended the move, saying the bill that will replace the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act serves public interest. तो नाम रखने की सनक इनकी है माननीय अध्यक्ष महोदय. मोदी सरकार तो केवल काम करना चाहती है, केवल काम में हमारा विश्वास है. विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए. The opposition hit back, alleging the government rammed the legislation through the House without meaningful discussion. विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया. अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी. वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं. तो ये एकदम श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे. Earlier, opposition parties had staged protests inside the House, warning that tensions would escalate if the bill was forced through. जैसा अमर्यादित आचरण का प्रदर्शन हुआ, कागज फाड़ के उछाले गए, आसंदी के सामने टेबलों पे चढ़ गए. क्या ये बापू जी के आदर्शों की हत्या नहीं है? मनरेगा का बदलने का या नाम बदलने का नहीं है, ये अपने हकूक है. राइट टू वर्क, ये जो हक हमने दिया था, उस हक को छीन ले रहे हैं. यही गुंडागर्दी और इसी से हम परेशान हैं. जब से हम नए सांसद जब से आए हुए हैं, तब से यही गुंडागर्दी देख रहे हैं. The bill, which replaces the 20-year-old Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, proposes a statutory guarantee of 125 days of wage employment in a financial year for every rural household whose adult members are willing to undertake unskilled manual work. It, however, reduces central funding from 100% for labour cost under Manrega to 60% for most states under G Ram G bill. Despite chaos and confrontation, the VP G Ram G bill has cleared the Lok Sabha. The government calls it reform. The opposition calls it an attack on welfare. What is clear is that this legislation has ignited a political battle that is set to spill beyond Parliament. Bureau Report, India Today.